let's our start let's start our lecture today. Hello. So let's start our lecture today. Last time we in last class we discussed that what do you meant by R square? R square क्या है और how we can calculate the R square and adjusted R square. In this class we will start that if we say that R square is equal to 1 minus RSS over TSS. So I have told you about this situation that 1 minus R square is equal to RSS or TSS. Basically, we say that TSS is equal to total sum of square is equal to ESS plus RSS. Explanatory sum of square और रेजिड्यूल. तो मैंने आपको बताया था कि वैसे बेसिकली आर स्क्वायर जो है बेसिकली वो हमें ये बताता है कि हाउ मच इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन द डिपेंडेंट वेरिएबल, उसको एक्सप्लेन कैसे करता है. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द आर स्क्वायर. फिर हमने कहा था कि इफ ओवर आर स्क्वायर इज आर स्क्वायर वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इनके दरमियान बिटवीन 0 to 1 होती है. अगर आर स्क्वायर ओवर शूट कर दे इट मीन दैट इफ आर स्क्वायर इज अराउंड इक्वल टू 1, it means that this model is not mathematical, this is econometric model. तो इस econometric model को हम मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके हमारी इकोनोमेट्रिक्स ही डिमिनिश हो जाएगी. तो उसके लिए फिर हम we calculate the we also taking the value of adjusting R square. तो adjusting जो R square होता है उसकी वैल्यू जो होती है R square की वैल्यू से लेस होती है, जिसको हम एक्यूरेटली लेते हैं. तो टुडे वी स्टार्ट अबाउट द लेक्चर ऑन कंपेयरिंग द टू आर स्क्वायर वैल्यू. अगर हम कंपेयर करें दो आर स्क्वायर की वैल्यू को, एक हमारे पास सिंपल फंक्शन है लॉग लीनियर फंक्शन. ln जो है लॉग है डिपेंडेंट साइड पे, और इंडिपेंडेंट साइड पे हमारे पास वेरिएबल already given है beta 1 plus beta 2 x2 plus beta 3 x3 and u. तो this is called the log linear model. और सेकंड जो हमारे पास मॉडल है y is equal to alpha plus alpha 1 plus alpha 2 x2 plus alpha 3 x3 plus u. x1 x2 x3 these are also called the independent variable or explanatory variable, and y is the dependent variable and mu is the error term. The compute R square term cannot be compared. अब अगर हम इस इधर अगर मॉडल की R square की वैल्यूज जो हैं, अगर हमारे if we have a two model, one is the log linear model and second one is the simple model, we can't be compare these two model because this is the different model as compared to y. because जो y हमारे पास है वो हमारे पास जो मॉडल है वो different as compared to ln of y, because this ln of y model is only this value is if we taking the log of this value, we say that this is the percentage of this value. But here is the simple model, we cannot be compare this model with this, because this is the simple linear model and this is log linear model. The computed R square term cannot be compared. इसकी जो R square term आएगी R square और इस मॉडल की जो R square का term आएगी वो there is huge difference between two values because we can't be compare these two variable. R square measure the proportion of variation in dependent variable account for the explanation. यानी independent side how much the independent variable explain the dependent variable. Basically this is called the R square. Here we can say that so R square is equal to 1 minus RSS. RSS is a residual sum of square error term. ln of y minus ln of y bar का square. यहाँ पे देखें दोनों पे ln लग जाएगा तो ln is not measurable. यानी इस मॉडल का यानी जो रिजल्ट आएगा R square का वो डिफरेंट होगा as compared to this simple model. अब अगर हम इनका देखें ये हम कंपेयर करें
तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी मतलब एल एन ऑफ वाई की वैल्यू आएगी, एल एन ऑफ वाई जो है उसमें से वाई बार दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मीन ऑफ इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज आल्सो कॉल्ड द मीन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज एक्चुअल वाई वैल्यूज। तो इसमें से माइनस करके इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास एक सम ऑफ 1.62, यहाँ पे 1.00 आ रहा है। तो इसके सम और इसके सम में ह्यूज डिफरेंस है, because this is the log linear model and this is only a linear model. So the abnormal data, अगर हम linear model का डाटा देखें तो we getting a value of last time we getting the value of y is equal to 85, 40, 130, 140, 80 and 90 and so on 100, and x variable is the value of x variable is observation are 80, 100, 120, 140, 160, 180 and so on. We getting the alpha and beta values. We know that beta is equal to sum of x y minus sum of x sum of y over sum of x minus x power का स्क्वायर। ये हमने पढ़ा था कि हम we can get a value of beta and also we can get a value of alpha। अल्फा की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। तो जब अल्फा और बीटा की वैल्यू we put these value on this mod equation, this is inferential equation, this is basically beta 1 and this is called the beta 2, yeah, alpha and beta. So these are value we calculate already, we have discussed in last lecture. So here we can say x and y and just y minus y bar, y minus y bar, x minus x bar, इनका आपस में स्क्वायर लेंगे और फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर भी और y माइनस y। तो मीन बेसिकली हमारे पास आपको पता है कि y इज इक्वल टू y बार, तो y माइनस y बार दिस इज आल्सो मीन ऑफ दिस डाटा एंड मीन ऑफ डाटा इज कैन कैलकुलेट विद number of observation divided by total values. Number of observation is we add total values 100, 90, 80 and 140. We add up these values and there are how much number in figure 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. We divide this, this is called the mean of y bar, and now in x values we add up these all values and divide it by the total number which is 7, we get 140 and 195. These are the mean values. इन मीन वैल्यूज में से जब ये x y की वैल्यूज मीन में से माइनस करते जाएंगे और x की माइनस करते जाएंगे, ये दिस इज ये हमारे पास ऐड अप होके ये आएगा। So if we calculate the r square of the value, we know that total sum of square is equal to explanatory sum of square plus residual sum of square। तो आर स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे बीटा 2 हैट का स्क्वायर, वी ऑलरेडी कैलकुलेट दिस वैल्यू, सम ऑफ x माइनस x बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ y माइनस y बार का स्क्वायर। दीज ऑल द वैल्यूज वी कैलकुलेट दीज वैल्यूज x माइनस x बार का स्क्वायर इज 11,200 and y minus y bar का स्क्वायर इज 6,514। We have already calculated these values from the table, and beta 2 we know that our formula is equal to beta 2 is equal to sum of x y minus sum of x sum of y divided by n into sum of x minus x bar का whole का square। All these value put in this formula, we get our square value is 0.05. This is overall square value. It means that due to independent variable explain dependent variable around about 5%. The total variation comes from independent variable with dependent variable is 5%। यानी ये 0.5 का मतलब ये है कि ये जो independent variable है वो only dependent variable को 5% explain कर रहे हैं। R square is suggest 5% variation to ln y is explained by independent variable, only 5% जो है independent variable is explained by dependent variable। Now if we calculate the R square with
सिंपल लीनियर मॉडल। एन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप आर स्क्वायर है एफ। स्टूडेंट, जब हम एफ एफ और आर स्क्वायर की क्या रिलेशनशिप है, देखें बेसिकली हमारे पास एफ जो होता है, एफ मीन वी चेक द सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट ऑल टोटल कंप्लीट मॉडल का हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंट चेक करते हैं। बट टी वैल्यू और पी वैल्यू जो मैंने आपको लास्ट टाइम आपको इलेबोरेट कराई थी, तो वही इन टी वैल्यू एंड पी वैल्यू वी ओनली कैलकुलेट टी वैल्यू ओनली अ सिंगल वेरिएबल सिग्निफिकेंट। यानी एक मॉडल है ना, मॉडल के अंदर 5-6 वेरिएबल है, एक वेरिएबल को इंडिविजुअल चेक करने के लिए जो टेस्ट लगता है वो टी टेस्ट होता है, विच इज वी ऑलरेडी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर। बट इन कंप्लीट मॉडल को जब हम देख रहे होते हैं, तो वहां पे उसकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चेक करने के लिए H0 या H1 है, तो हम एफ टेस्ट लगाते हैं। और एफ जो टेस्ट है, एफ टेस्ट का जो फार्मूला होता है आर स्क्वायर ओवर के माइनस 1 इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर ओवर एन माइनस के। दिस इज कॉल्ड द एफ टेस्ट। एन इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन आर स्क्वायर एंड एफ टेस्ट। एन जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, and we have a number of observation. Y is equal to, this is our constant, this is 1.2 x slope, and this is our minus 4p, and y is equal to 3 plus 1 point x minus 1. ये basically एक function है, किसी डिमांड का function है। हम can say that y is equal to 2 plus 1.2 x minus 4p and y is equal to 3 प्लस 1.3 x माइनस 2p। ये दो फंक्शन हमारे पास ये हैं। एक का आर स्क्वायर ये आया है, आर स्क्वायर वैल्यू 0.05 and second is r square is 0.9. It means that these dependent variable 90% explain the independent variable, 90% explain the dependent value. This value shows that these independent explanatory variable 5% explain the dependent value, 0.5%. So if f value of this is 0.18 and f value of this is 31.5, देखिए जितना आर स्क्वायर हाई होगा, जितने ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है, वो डिपेंडेंट को ज्यादा शो करेंगे। इट्स मीन दैट ओवर आर स्क्वायर इज मोर 90% and we say that over f value is 31.5%, which is significant for our model. f की वैल्यू जो है वो टेबुलेटरी वैल्यू 21% होती है, जहाँ पे 31 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 में 31 ह्यूज वैल्यू है, तो दिस इज ओवर मॉडल इज वेरी सिग्निफिकेंट। ऑल द वेरिएबल व्हिच इज इंक्लूड इन दिस मॉडल आर completely explain, 90% explain the dependent variable. But here the second जो मॉडल है उसमें r स्क्वायर की वैल्यू इज वेरी माइन्यूट, which is 0.5%, which is very less, and which shows that all the variables we include in this model is not explain completely the y variation dependent variable. So f value is also a very less. It shows that our model is not significant. ये जो वेरिएबल हमने मॉडल में डाले हैं, ये हमारा मॉडल ही जो है ना हमने सही चुना नहीं है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो ये दिस मॉडल इज नॉट सिग्निफिकेंट and this model is significant for our value. So here we can say that three type of econometric model. Determinants of household and saving. One is यानी जो घर में जो लोग होते हैं, हाउस होल्ड सेविंग के कौन कौन से डिटरमिनेंट्स होते हैं। एक तो बंदे की इनकम होती है, अगर इनकम ज्यादा होगी तो वो सेविंग ज्यादा करेगा। सेकंड डिटरमिनेंट ये हो सकता है कि जो आप जो बास्केट्स ऑफ गुड्स व्हिच यू परचेज, उनकी प्राइस डाउन हो जाए मार्केट में, ये दिस इज आल्सो अ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मॉडल। सेकंड जो है सो ऑन। इस तरह इम्पैक्ट ऑफ एज डिपेंडेंसी ऑन हाउस होल्ड सेविंग, एज डिपेंडेंसी का हाउस होल्ड सेविंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, और इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन हाउस होल्ड सेविंग, इनकम का हाउस होल्ड सेविंग पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये दीज आर थ्री डिटरमिनेंट व्हिच इज वी डिस्कस इन आवर मॉडल। इन हाउस होल्ड सेविंग का डिटरमिनेंट कौन कौन से होते हैं,
एज डिपेंडेंसी जो होती है, उम्र के लिहाज से एज हाउस होल्ड सेविंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन हाउस होल्ड सेविंग, इनकम का हाउस होल्ड सेविंग पे क्या है। मॉडल 1 में आप देखें तो हमारे पास ये मॉडल स्पेसिफिकेशन हमने की है कि हाउस होल्ड सेविंग जो है, मॉडल स्पेसिफिकेशन में HS मीन हाउस होल्ड सेविंग इज डिपेंड अपॉन द बीटा 1 एंड बीटा 2 PCL, यानी पॉजिटिव रिलेटेड विद हाउस होल्ड सेविंग, AD इन्वेस्टमेंट रिलेटेड विद हाउस होल्ड सेविंग, इन्फ्लेशन नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेटेड विद। देखें ये जो है ना EC इम्पैक्ट, तो ये पर्सनल सेविंग हो गई, और AD जो है वो एज डिपेंडेंसी, यानी हाउस होल्ड सेविंग जो है हमारे पास एज डिपेंडेंसी, पर्सनल सेविंग जो हमारे पास होगी, और INF का मतलब है इन्फ्लेशन। दिस इज द एरर टर्म कि हमारी हाउस होल्ड सेविंग जो वो these all three variables which are include over model that personal saving और यानी AD हमारे पास age dependency and third one is the inflation. These are three variables we include in this model which relate with the household saving जो हम घरों में saving करते हैं। देखें कि household saving का जो personal यानी हम कह सकते हैं कि एक हाउस होल्ड की जो सेविंग है वो इनकम, इम्पैक्ट ऑफ इनकम ऑन हाउस होल्ड सेविंग, वो इनकम जो हम पर्सनल सेविंग कर रहे हैं उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जितनी ज्यादा पर्सनल सेविंग करेंगे इतना हाउस होल्ड सेविंग बढ़ेगी, जितना कम करेंगे नहीं कम होगी। उसके बाद AD जो है एज डिपेंडेंसी, जितनी एज कम होगी तो सेविंग ज्यादा होगी, एज ज्यादा हो जाएगी सेविंग कम, इसका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप। तो इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, इट्स मीन दैट इन्फ्लेशन इज एंड मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हाउस होल्ड सेविंग। अगर इन्फ्लेशन आई है तो मे बी इट इम्पैक्ट ऑन द पॉजिटिव सेविंग और नेगेटिव सेविंग। अब देखें जब हमने ये मॉड्यूल कैलकुलेट कर लिया है तो वी हैव अ वैल्यू, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इज हाउस होल्ड सेविंग। मेथड जो हमने यूज किया है लीस्ट स्क्वायर मेथड जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। So here we discuss that this is the T values of data and देखें ये P पर्सनल जो सेविंग है वो हमारे पास इनकी वैल्यूज जो T वैल्यू आई है वो 3.879 which is significant. We say that this variable is fit for our model because it is explained the 0.5% जो हमारे डिपेंडेंट मॉडल। AD जो है वो भी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है, और ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट है। इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन में भी नेगेटिव रिलेटेड है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हाउस होल्ड सेविंग कम होती है, और जब इन्फ्लेशन कम होती है तो हाउस होल्ड सेविंग बढ़ती है। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप। हियर वी कैन सी दैट आर स्क्वायर वैल्यू over R square value is 0.99986. It means that our model explained independent variable or explanatory variable varies the dependent variable is 98%। 98% जो है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखें आर स्क्वायर बहुत हाई है, यानी हम इट्स मीन दैट 2% हम एरर कर रहे हैं और 98% हम एक्यूरेट हैं कि these variable we include on this model। Here we can see that आपको मैंने स्टूडेंट पहले बताया था कि जो टी स्टैटिस्टिक टी टेस्ट होता है बेसिकली वो हम एक इंडिविजुअल वेरिएबल पे कर रहे होते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस चेक करने। ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस के ये मॉडल अच्छा है या बुरा है तो हम एफ वैल्यू देखते हैं। इफ ओवर आर स्क्वायर वैल्यू इज वेरी हाई इट्स मीन दैट ओवर एफ वैल्यू इज वेरी हाई 1626.41 which is very high F value which shows that our model is highly significant or this model is very beneficial for us, highly significant। और ये मॉडल जो है ये जो हमने वेरिएबल चुने इस मॉडल में ये बहुत ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन मल्टीपल रिग्रेशन में हम देखते हैं कि टेस्टिंग का पहले हमने दो वेरिएबल एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट सिंगल वेरिएबल को
किया था, फिर टू वेरिएबल के ऊपर हमने डिस्कस किया। अब हम मल्टीपल रिग्रेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। वी डिस्कस ऑन द मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल। तो here we can see that testing the hypothesis about the इंडिविजुअल। पहले हम टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस अबाउट द इंडिविजुअल पार्शियल रिग्रेशन। अब हमारे पास देखें दो या तीन वेरिएबल आ गए हैं, तो ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है। इसकी हम टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस अबाउट द इंडिविजुअल पार्शियल रिग्रेशन, टेस्टिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेट मल्टीपल रिग्रेशन, टेस्टिंग ऑफ द पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट, sharply pattern restriction, testing the stability of estimation regression model over time and its different cross section unit। ये हमारे पास से मल्टीपल रिग्रेशन में डियर स्टूडेंट्स हम टेस्टिंग द हाइपोथेसिस करेंगे। सबसे पहले वी डिस्कस द इंडिविजुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट, देन वी टेस्ट करेंगे ओवरऑल सिग्निफिकेंस। इट्स मीन वी टेस्ट द इंडिविजुअल वेरिएबल ना, सिंगल को देखेंगे कि उसकी हम टी वैल्यू देखेंगे। बेसिकली वी कैलकुलेट द टी वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल like this। we calculate first of all we seeing the value of ECI, AD, इन्फ्लेशन, इन सब का टेस्ट करेंगे और इंडिविजुअली हम इनके हाइपोथेसिस देखेंगे कि ये सारे वेरिएबल सिग्निफिकेंट हैं या नहीं। फिर हम करेंगे टेस्टिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस, यानी वहां पे हम टी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। now we calculate the f value, now we calculate the f value, f value। तो टेस्टिंग द एफ वैल्यू करेंगे और टेस्टिंग द पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट। पार्शियल में एक होती है पार्शियल और एक होती है मल्टीपल सिंगल, यानी सिंगल वेरिएबल की जो टेस्टिंग जो कोएफिशिएंट है बीटा 1 बीटा 2 उनको सिंगल टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ एस्टिमेट रिग्रेशन मॉडल ओवर द टाइम, उसकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, उसका आर स्क्वायर चेक करेंगे कि आर स्क्वायर एडजस्टेड आर स्क्वायर एस स्टैटिस्टिक। टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द इंडिविजुअल पार्शियल रिग्रेशन। नाउ वी कैन टेस्ट, जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इंडिविजुअली हमारे पास पर्सनल यानी हमारे पास कन्वेंशन जो हमारे पास है वो, उसके बाद एडी हमारे पास इन्फ्लेशन है INF। एडी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि एज डिपेंडेंसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी इंडिविजुअली टेस्ट द हाइपोथेसिस इन पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट। लाइक हम यहाँ पे देखें बीटा 2 के साथ ये वेरिएबल है तो हम बीटा 2 का एच नॉट बनाएंगे, फिर एडी के साथ बीटा 3 है तो बीटा 3 का एच नॉट बनाएंगे, और इन्फ्लेशन का बीटा 4 है बीटा 4 का एच नॉट बनाएंगे। ये इंडिविजुअली हमने इनको टेस्ट करना है फॉर गेटिंग द टी वैल्यूज। हम टी वैल्यूज इनकी चेक करेंगे कि दीज वेरिएबल आर फिट फॉर आवर मॉडल आर नॉट। H1 में हम देखते हैं H1 ये इनका अल्टरनेटिव, ये नल हाइपोथेसिस है बेसिकली। दिस इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस, दिस इज कॉल्ड द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल और अल्टरनेटिव के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये हम इसकी इंडिविजुअली पार्शियल रिग्रेशन करेंगे। नाउ टेस्टिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेट। ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ एस्टिमेट का मतलब है, मैंने स्टूडेंट आपको बताया कि हम ओवरऑल मॉडल की सिग्निफिकेंस चेक करेंगे, which is called the f value। Last time we discussed the t value of data। यहाँ पे हम basically discuss करेंगे t value। Here we test the significance of model in f value। Basically overall हम जो है ना इसका multiple regression estimate करके हम टेस्ट करेंगे। We know that f naught is equal to beta 2 beta 3 and beta 4 is equal to 0, H1 is equal to beta 2 beta 4। This is called these are called the null and these are the alternative। कोई जो H naught रिजेक्ट या एक्सेप्ट की बात करते हैं। Here we can say the R square, यानी R square की सिग्निफिकेंस चेक करेंगे कि R square की वैल्यू ग्रेटर देन है या R square की वैल्यू कम है। जब R की वैल्यू आ जाएगी, these values are put up in this equation and you get a f value। If our R square is high, R square value is very high, our f value is very high, we can say that our model is R। all over the model which we
टेक इन दिस रिग्रेशन फंक्शन इज, वो हमारे पास सिग्निफिकेंट है, अदरवाइज इनसिग्निफिकेंट। टेस्टिंग द पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट सेफली, स्टाफली सर्टेन रिग्रेशन। ये देखें कि हम पार्शियल कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन f इज इक्वल टू r अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स के अगर हमारे पास हम मॉडल को फ्री रख देते हैं ना, वी हैव अ मॉडल y इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 एंड म्यू, तो दिस इज कॉल्ड द अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। और अगर इसमें हम कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें, जैसे हम कहेंगे बीटा बीटा जो है उसको हम बीटा 1 की जगह 1 माइनस बीटा 1 कर दें, तो ये हमने इस पे एक यानी हमने क्या कर दिया कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमने ले ली, तो ये 1 माइनस बीटा 1 जब मॉडल में होगा तो ये रिस्ट्रिक्टेड मॉडल होगा। तो एफ की वैल्यू जो होती है अनरिस्ट्रिक्टेड के वो सेम जो हमारे पास लाइक मॉडल होता है उसमें से आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी रिस्ट्रिक्टेड मॉडल की वैल्यू एम इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और इस तरह 1 माइनस आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल का n माइनस के जे करेंगे तो हमारे पास एक एफ वैल्यू आएगी। लाइक सेम ये देखें कि हमारे पास f इज इक्वल टू आर एस एस। आर एस एस का मतलब है रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर रिस्ट्रिक्टेड, यानी वो मॉडल जिसका जो आर एस एस का मतलब ये है टी एस एस इज इक्वल टू ई एस एस प्लस आर एस एस। बेसिकली वही क्या हम क्या करेंगे कि एयर वही कैलकुलेट द आर एस एस रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर म्यू टर्म का जो है ना रेजिड्यूल सम रिजल्ट निकालेंगे रिस्ट्रिक्टेड मॉडल का, वो मॉडल जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन कोई लगाई हुई है कि ये कोई डमी वेरिएबल डाल दिया है या 1 माइनस बीटा 1 कर दिया है, और अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल का आर एस एस डिवाइडेड बाय एम, रिस्ट्रिक्टेड मॉडल का जो है आर एस एस अनरिस्ट्रिक्टेड डिवाइडेड बाय एन माइनस के। हियर वी कैन कैलकुलेट द एफ वैल्यू ऑफ दिस एंड एफ वैल्यू ऑफ दिस मॉडल। एम इज द नंबर ऑफ लीनियर रिस्ट्रिक्शन, जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसके ऊपर मॉडल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है उसका, k is the number of parameter in unrestricted model और n is number of observation। देखें पैरामीटर का मतलब y is equal to बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 लाइक दिस बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा 3। हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल है, इसमें हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। लाइक हम क्या करेंगे इसके ऊपर जो बीटा 2 है इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, बीटा 2 1 टाइम 0 होगा और 1 टाइम 1 होगा, तो हमने इसमें एक डमी वेरिएबल डाल के इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो जब इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो उसकी हम रिस्ट्रिक्टेड मॉडल का आर स्क्वायर कैलकुलेट करके अनरिस्ट्रिक्टेड में से इसको माइनस करेंगे, और ये जो हमारे पास आंसर आएगा इसका सेम लाइक ये जो हमारे पास आंसर आएगा हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास यानी पार्शियली हमारे पास जो आर स्क्वायर की एफ वैल्यू आ रही है, एफ वैल्यू हमारे पास आ रही है वो हमारे पास ग्रेटर है या लेस है, हमारा मॉडल ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। अब देखिए आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल मीन if over r square unrestricted model means r square unrestricted are greater than or equal to restricted model, and RSS restricted is greater than RSS unrestricted। अब देखें इसका मतलब क्या हुआ है ये स्टूडेंट, ये r स्क्वायर है, ये ओवरऑल मॉडल को जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को हाउ मच एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर हम r स्क्वायर का जो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो हमारे पास इसका मतलब ये है इसकी जो आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर होगी रिस्ट्रिक्टेड मॉडल के, वो मॉडल जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। बट आरएसएस का मतलब क्या हुआ, जब हम मॉडल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो हमारे पास जो एरर टर्म का रेजिड्यूल आएगा उसकी वैल्यूज जो है आरएसएस की वो हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड मॉडल की ज्यादा होंगी और अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल की कम होंगी। इट्स मीन दैट जब हम ये लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर जो अनरिस्ट्रिक्टेड है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी और रिस्ट्रिक्टेड की कम आएगी। बट क्या वजह है, वजह ये है कि जब हम रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो मोस्टली जो हमारा जो एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं वो मोस्टली बाल वेरिएबल जो है हमारे एरर टर्म में चले जाएंगे, तो वो म्यू में चले जाए। जब एरर में जाएंगे तो हमारा आर स्क्वायर आरएसएस जो है रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर इन रिस्ट्रिक्शन में
वो शो होगा ग्रेटर देन आर एस एस अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल में. Here we can also discuss like an example that you were asked to consider the following. So ln is equal to ln yt is equal to beta 1 plus beta 2 ln of x3 plus beta 3 ln of x plus beta 4 and so on. So here we individually checking the hypothesis that beta 2 is greater than 0, beta 3 is less than 0, beta 4 is greater than 0. So where y is per capita consumption of children and x2 is the real disposable per capita income है, x3 हमारे पास real प्राइस ऑफ चिकन है, x4 यानी हमारे पास एक मॉडल है. ये हमारी इनकम जो है वो उस पे डिपेंड करती है कि हम जो है चिकन पे कितना कंज्यूम कर रहे हैं. चिल्ड्रन जो हमारे पर कैपिटा कंजम्पशन इन चिकन पे per capita consumption on income real प्राइस ऑफ चिकन है, ये जो x4 है, x3 x4 जो है हमारे पास रिटेल प्राइस ऑफ pork per table and x5 is the real retail price of beef है. These are all the products we can here discuss. So we have these are the products. इसके ऊपर हमने ये हाइपोथेसिस जनरेट किए हैं कि बीटा 2 इज ग्रेटर देन ए, जो पार्शियल हाइपोथेसिस हमने जनरेट कर दिए हैं. Now suppose someone maintain the chicken or pork, beef or unrelated product, so we can see that so here we see that suppose that someone maintain the chicken and pork and beef are
related product in the sense of chicken convention is not affected by the price of pork or price of beef. In that H naught is equal to beta 4 and beta 3 is 5 is not equal to 0. Therefore, the consider the linear regression that ln of y is equal to beta 1 plus beta 2 and beta 3 and 2. So equation is also concerned the un unconstrained regression using the data given by exercise to obtain the following unrestricted model. हम यहाँ पे देखें ना, सबसे पहले हमारे पास दिस इज अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। जब हम इस रिस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि ये जो प्राइस ऑफ चिकन है और प्राइस ऑफ बीफ है नॉट अफेक्ट द कन्वेंशन ऑफ एनी पर्सन, तो उसके बाद जब ये हम लगा देंगे ये टू बीटा 2 और बीटा 3, तो ये हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी और हमारा मॉडल जो है वो श्रिंक हो गया, ये बन गया। दिस इज ओवर रिस्ट्रिक्टेड मॉडल एंड दिस इज ओवर अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल। तो अनरिस्ट्रिक्टेड रिग्रेशन मॉडल के अंदर जब हमने रिग्रेशन लगाई तो हमारे पास ये देखिए आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड का ये आ गया, हमारे पास आर स्क्वायर इज 0.98%, 98% these independent variable explain the dependent variable. So here we can see that over these are over these values are so constraint ये this is over restricted model constraint ये हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, हमने कहा कि पॉर्न और जो पोर्क और बीफ जो है चिकन है उसकी प्राइस को हमने हटा दिया, हमारी इनकम पे वो रिलेट नहीं कर रही है। दिस इज आल्सो रिस्ट्रिक्टेड मॉडल वेयर आर स्क्वायर इज 0.98, ये भी हमारे पास आर स्क्वायर जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है 98%, एक्सप्लेन कर रहा है these variable are explain the dependent variable on 98%. This is R square restricted and this is R square unrestricted. While the figure in the percentile are estimate the standard error, so the R square value of ये जो 8.23 जो रिग्रेशन है उसका R square restricted वैल्यू ये है और 8.724 these are R square restricted जो मॉडल है ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये restricted। These values are all the values put up in this f values। ये जो इसका f का फार्मूला R square unrestricted minus R square restricted divided by n1 minus R square unrestricted n minus k। All these values of R square restricted and R square unrestricted put up in this f formula, we can get the value of f। Value of m in present case is 2। m जो नंबर ऑफ वो हमने रिस्ट्रिक्शन 2 लगाई है, देखिए नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शन हमने 2 लगाई है कि हमने पोर्क और बीफ की प्राइस को निकाल दिया, तो 2 m हमारे पास 2 रिस्ट्रिक्शन है, n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 23, ये जो है हमारे पास बीटा की जो वैल्यूज हैं 5 हैं, 1 2 4 and 5। These all values put up this model, we can get a value of f which is 1.12। ये f की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी 1.1, which is very much low value। तो ये हमारे पास शो कर रही है कि ये हमारे पास ये जो वैल्यूज है ये जो है ना f की वैल्यू हम we can calculate from this model, which is the f distribution with 2 and 18 degree of freedom at 5%। really f value is not statistical। अब मैंने आपको बताया था कि f की वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए, which is tabulated value is 3.55। लास्ट टाइम हमने जब f की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो f वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ये आई थी 18/26.45, which is very high and our model is very significant। Here our f value which is very low, which is around 1.12, so less than a tabulated value। over tabulated value on 5% level पे हमारे पास जो f की वैल्यू है this is 3.55, the p value is 0.34, therefore there is no reason to reject the null hypothesis। हम इस यहाँ पे null hypothesis को रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी f वैल्यू बहुत कम है। if over f value f calculated value is greater than tabulated value we reject h naught, here is h naught नहीं रिजेक्ट होगा,
So H not rejected means that H not accept, यानी जो हमारा null hypothesis है वो accept होगा. The demand for the chicken does not depend upon the pork and beef price. So ओवर हाइपोथेसिस करेक्ट कि जो चिकन की डिमांड है वो पार्क और बीफ के प्राइस से रिलेट नहीं करेगी. इन शॉर्ट वी कैन एक्सेप्ट द कांस्टेंट रिग्रेशन मॉडल अगर रिप्रेजेंट द डिमांड फंक्शन ऑफ चिकन. तो ये इस मॉडल को हम जो है ना हमारे लिए ये एक्यूरेट मॉडल है. दिस इज बट दिस मॉडल इज नॉट एक्यूरेट बिकॉज द प्राइस ऑफ चिकन डज नॉट affect the price of beef and pork. Testing the structural or parameter stability chow test. यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया. अब डियर स्टूडेंट क्या होता है कि ब्रेक्स आ जाती हैं बाज़ औक़ात. हमारे जो मॉडल्स होते हैं उनके जो डाटा के अंदर ब्रेक्स आ जाती हैं. वी हाउ वी टेस्ट दीज वेरिएबल जो है इनके अंदर जो ब्रेक्स हैं. हाउ कुड वी एडजस्ट द वैल्यूज ऑफ ब्रेक फ्रॉम दिस मॉडल. तो ब्रेक्स को हम कैलकुलेट करने के लिए हम मॉडल के अंदर जो ब्रेक्स हैं उनके लिए हमारे पास जो टेस्ट होता है पैरामीटर स्टेबिलिटी टेस्ट, दिस इज कॉल्ड द चाउ टेस्ट. नाउ सेविंग एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बिलियन ऑफ डॉलर यूनाइटेड स्टेट में हमारे पास गिवन है. वी हैव अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 1970 to 1982. Like this is 12-year observation. Our saving is equal to 61, 68.6, 63. These are our saving and this is our income. Our observation is from 1970 to 1995. ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और हमारे पास डाटा है सेविंग और इनकम का डाटा है. अब दिस इज ओवर सेविंग रेट और दिस इज ओवर इनकम. ओवर इनकम इज going to increase and saving are also gradually increase. तो ये हमारे पास डाटा we collect the data from 1970 up to 1995. अब हम चाउ टेस्ट बेसिकली क्या करता है. if we there are some event in this scenario we can say that we took a data from 1980 to 1995. In between there are some event, maybe economy going toward crash or going toward the boom condition. तो वो बूम में जाएगी या क्रैश में होगी तो उसके दरमियान में कुछ ना कुछ जो है क्या हो जाएगा कि दरमियान में इकोनॉमी में ब्रेक्स भी आ जाते हैं. तो उन ब्रेक्स को कैप्चर करने के लिए वी टेकिंग द टेस्ट वी टेस्टिंग ओवर डाटा with the chow test. We first of all we take a period of 1970 to 1981, time period of 1980 to 1995 और थर्ड टाइम पीरियड हमने 1970. हमने 3 पीरियड ले लिए भाई. एक 1970 से 1981 तक, सेकंड 1982 से लेकर 1995 एंड थर्ड वन इज 1970 to 1995. ये कंप्लीट पीरियड हमने ले लिया 1900 और इनको हमने ब्रेक किया टू पार्ट. तो हमारे पास वी हैव अ रिग्रेशन y is equal to lambda 1 plus lambda 2 x plus mu 1 n1 is 12 ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने ईयर लिए वो बेसिकली 12 है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n2 is 14. yt is equal to gamma 1 plus gamma 2 xt plus ut and y3 is alpha 1 plus alpha 2 xt ut. ये हमने ओवरऑल जितनी भी दोनों ऑब्जर्वेशन है n is equal to n1 plus n2 12 plus 14 26 ईयर का डाटा है. ये 12 ईयर का डाटा ये 36. अब हम जब हम इसमें रिग्रेशन रन की we first of all we run a regression on the model which is taken a data from 1970 to 81. We can get a t value of lambda 1 and lambda 2 variable which is t value is equal to this and 9. अब देखिए हमारी t value जो calculated है वो greater than tabulated है. We reject that not and this variable is suitable for us. Here R square value is 90. It means that over explanatory variable explain the dependent variable at 90% level. RSS1 रेसिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 1785 यानी वो t है. TSS is equal to ESS plus R. Number degree of freedom we have
two variables used in this parameter use gamma 1 and gamma 2. It means over number of observation 12. हमने दो variable को use किया तो 10 हमारे पास degree of freedom. Now, secondly, we calculate the model of second where number of observation is 14 and we take on the period of 1982 to 1995. Here we t value is 0, 4 and 1.7. Here t value is insignificant. These values t value जो है हमारे पास बीटा की वैल्यू भी कम आई है. In this scenario r square is 29, which is shows that over explanatory variable only explain the dependent variable 29%. हमारे पास रेजिड्यूल देखें, रेजल्ट की टर्म यहाँ पे बहुत ज्यादा आई है. तो रेजल्ट की टर्म ये थी और यहाँ पे हमारा सारा का सारा फ्लेक्स जो है वो रेजिड्यूल एरर टर्म पे चला गया. हमारी डिपेंडेंट एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इतना डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं जितना हमने रेजल्ट में डाल दिया है. दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 टू वेरिएबल यूज ऑलरेडी हमने इस मॉडल में टू वेरिएबल को यूज किया है. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 14 डिग्री ऑफ. थर्ड मॉडल जो है वेयर वी टुक अ कंप्लीट डाटा फ्रॉम 1970 टू 1995 लिया है. उसको जब हमने रिग्रेस किया तो वी गेट अ टी वैल्यू इज 4 and 8. These two values are very significant. Over R square entirely model explain 76%. For explanatory variable explain the dependent variable is 76%. रेजिड्यूल जो हमारे पास आया वो 23,000 248. डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे 24 है. 26 ऑब्जर्वेशन थी, दो वेरिएबल हमने यूज किया और टाइम पीरियड हमने कंप्लीट लिया तो ये हमारे पास. नाउ आर स्क्वायर अनरिस्ट्रिक्टेड मॉडल में हमारे पास रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर r1 एंड रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर r2 इन दोनों को हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम m1 m2 -2 2 के का मतलब ये है कि हमने दो डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज कर लिया. we obtain a restricted model जो उसका RSS है वो हमारे पास this is over unrestricted model. इसका RSS हमने ले लिया है. This is over आता है 1785 and second RSS we can get 17,007. ये इन दोनों को ऐड अप किया हमने and हमारे पास unrestricted में हमारे पास we have a two model which is unrestricted 1 plus unrestricted restricted. RSS unrestricted is equal to RSS 1 plus RSS 2. RSS 1 ये हो गया हमारे पास और RSS 2 जो है वो हमारे पास 10,000 वाला हो गया. ये हो गया. This is RSS 2 and this is RSS 1. RSS 1 and RSS 2. इन दोनों को हमने ऐड अप किया वो क्या था RSS जो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड हुआ है 23,248. RSS रिस्ट्रिक्टेड जो है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड मॉडल वो हमारे पास है जी. रिस्ट्रिक्टेड मॉडल का जो RS जिसमें हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई हमने इसको ब्रेकअप किया डाटा को टू पार्ट में. Our value is 23,000. We add up 248.30 and RSS unrestricted जो हमारे पास मॉडल में can get RSS from 23,248. तो RSS जो हमारे पास restricted है ना वो हमारे पास 23,248. ये कंप्लीट जो हमारे पास मॉडल है टाइम पीरियड ऑफ 1970 टू 1995 इसको हमने लिया. तो RSS जो हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड है वो हमारे पास कोई ऐड अप की टू वेरिएबल वैल्यूज को ऐड अप किया तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ n जो है हमारे पास k जो है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है और हमारे पास ये इनको ऐड अप करने के बाद we can get 11,1790.2 divided by ये जो हमारा n1 plus n2 minus 2 के हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो 26 जिसमें हमारे पास से ये n1 और n2 2 plus 2 4 और 2 minus 3 के ये यूज होगी
हमारे पास 4 यानी ऑब्जर्वेशन हमने यूज कर लिया, वी ओनली गेट 22 ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जो f की वैल्यू ओवर f वैल्यू इज 10.92। From here we can say that from the f table for 2 to 22 degree the 1% critical f value is, हमारे पास 1% जो है f वैल्यू जो है उस tabulated वैल्यू जो है उसकी वैल्यू है 5.72। तो ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो है 10.96 विच इज ग्रेटर देन tabulated वैल्यू। ओवर कैलकुलेटेड ये टेबल की वैल्यू है और ये हमने कैलकुलेट की है खुद से। ओवर कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन tabulated वैल्यू। Therefore, we reject the null hypothesis. H naught parameters are stable, H1 parameters are not stable, or no structural change। तो ये यानी हम रिजेक्ट कर रहे हैं एच नॉट को कि हमारे पैरामीटर स्टेबल नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। ये देखें स्ट्रक्चरल चेंज की वजह से चेंज दरम्यान में ये हुआ है। ये जो वेरिएबल हमने यहाँ पे चेंज में देखा है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं आ रहे। इट्स मीन दैट ये हमारे पैरामीटर्स आर नॉट स्टेबल। वी रिजेक्ट एच नॉट H1 को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि और पैरामीटर आर नॉट स्टेबल। दिस इज ओवर F test which is we use in this restricted and non-restricted model. Here we can see that ln is equal to yi is equal to alpha plus beta 2 ln of xi plus mu i। Here double log model, वहाँ पे log linear model था, यहाँ double log है l n of y और ln of x double log। This model is called the log log double log और log linear model। इसको log log linear model भी कह सकते हैं, double log भी कह सकते हैं, because log lies on dependent है, dependent side पे भी lies कर रहा है और independent। This is our dependent side of the model equation है, independent both side पे ये log lies कर रहा है। तो slope of coefficient beta 2 measure the elasticity of y with respect to। वहाँ पे हम कह रहे थे कि x वेरिएबल y को कितना एक्सप्लेन कर रहा है, how much explain, यानी we can say that if 40 okay 40 explain 40 unit of x। here we अगर हमारे पास if we have a double log model both side पे log log आ जाए तो यहाँ पे हम elasticity of y with respect to x को हम कैलकुलेट करते हैं। वो कहते हैं कि f पर x जो है इतने परसेंट y वेरिएबल को एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे परसेंटेज आ जाएगी। The slope of beta 2 measure the elasticity of y with respect to x। This module assumes that elasticity coefficient between y and x of beta 2 remain constant throughout, hence the alternative name is constant elasticity model। अगर वो एक्सप्लेन न करे बीटा एक्स वाई को या सेम एक्सप्लेन करे जितना 100%, अगर एक्स में वेरिएशन वाई में भी 100% आए तो वी कैन से दैट ओवर कांस्टेंट इलास्टिसिटी मॉडल। यानी इट्स मीन over we check the elasticity if we increase the 5% of x due to the variation of x on y is also 5%. This is called the double log linear model। This is called the log linear model, single log ln of yt is equal to beta 1 plus beta 2t plus mu t। This is called the log linear model। Above the model is like a called the semi log model because only one variable in space of injection। Like
लेकिन सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा पास वो लॉग की शेप में है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा जो है वो विदाउट लॉग है। तो दिस इज कॉल्ड द सेमी लॉग और लॉग लीनियर मॉडल। तो इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं ड्यूरेबल फ्लक्चुएशन। So here table present that the total petroleum consumption expenditure on durable expenditure. Durable goods are those goods which like a furniture or a TV, and those goods which have a long life period. All the measure in 1992. Suppose we wish to find the elasticity of expenditure on durable goods with respect to total personal consumption. Plotting the log of expenditure durable goods against the log of personal expenditure, तो you see the relationship between। अब देखें ये log है हमारे पास एक्सपेंडिचर का, और ये हमारे पास पर्सनल कंजम्पशन है ड्यूरेबल गुड्स की। ये एक्सपेंडिचर इससे हम चेकिंग कर रहे हैं। We can calculate the beta 1 and beta 2 standard poverty values are highly significant. R scale is 98%. These variables are 98% explain the dependent value, where star indicates that the p value is extremely as the ratio that the elasticity of expenditure with respect to personal consumption is 1.9, suggesting that the total personal expenditure goes by 1% on average expenditure on goes by कितना 190। अगर 8% हम पर्सनल एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं तो ड्यूरेबल गुड्स को परचेज करेंगे 1.9%। ये हमारे पास क्या 10 एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल गुड्स वेरी चेंज इन द पर्सन। दिस इज वन रीजन व्हाई द प्रोडक्ट ऑफ ड्यूरेबल गुड्स keen eye on change in the person। यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये शो कर रहा है कि अगर हम 1% अगर पर्सनल कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन ड्यूरेबल पर्सनल कंजम्पशन में, उसकी वजह से हमारे पास ड्यूरेबल पे एक्सपेंडिचर कर, यानी हम पर्सनल एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हम ड्यूरेबल गुड्स को परचेज नहीं करेंगे। और इसका रिस्पॉन्स जो है 1% ये बढ़ाने से हमारे पास जो है ड्यूरेबल गुड का जो एक्सपेंडिचर है वो 1.9% बढ़ रहे हैं। इट्स मीन दैट ये हाईली रिस्पॉन्सिव है। तो ये हमारे पास एक टेबल है कि टोटल पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड कैटेगरीज। हमने पर्सनल एक्सपेंडिचर को टोटल कैटेगरी एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, यानी हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है क्वार्टरली पैटर्न दिया 1993 का फोर्थ क्वार्टर। एक 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 महीने का एक 3 महीने का होता है, तो 4 3 are 12। तो ये क्वार्टरली डाटा है। और हम कहते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है उनको कैटेगराइज किया हुआ है कि हम सर्विसेज पे कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, और सेकेंडली एक्सपेंडिचर ऑन द ड्यूरेबल गुड्स पे कितना कर रहे हैं, लाइक द फर्नीचर हम expenditure on non-durable those goods which are essential for us, like the vegetable हो गया हमारा, जो फ्लोर लेते हैं, वीट लेते हैं, चिकन लेते हैं, these are the non-durable personal expenditure consumption expenditure। ये पर्सनल हम आपके पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम आपके पर्सनल लॉस एंड तो ये आता है पूरे सर्विसिंग पे हम खत्म करा रहे हैं, एयर कटिंग करा रहे हैं, ये ड्यूरेबल गुड्स ये पर्सनल एक्सपेंडिचर। तो here we illustrate the growth model, consider the data। हमारे पास ये LX है, तो ये हमारे पास ये T वैल्यू है हमारे पास, यानी टाइम है हमारे पास, जो हमने टाइम वैल्यू लिया उसकी वजह से हम देखते हैं कि illustrate the rate of growth एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज पे कितने एक्सपेंडिचर हमारा रेट ऑफ ग्रोथ है। तो इन दिस टेबल वी शोज दैट दिस इज ओवर टाइम पीरियड, हम 0 से 4 मंथ, 4 से 8 मंथ, 12 मंथ, 16 मंथ एंड अप टू। और उसकी वजह से हमारा लॉग ऑफ जो एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, हम सर्विसेज के ऊपर कितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं।
So this is also a positive relationship between services expenditure and overtime period. जितना time period spend गुजरता जाता है हम service expenditure बढ़ा रहे हैं. So this regression shows there is positive association between time period spent and expenditure. Over the quarterly period 1990, expenditure on services annual growth rate about 2.9% in 7.79 log of daily in the period of in test 10 years versus compound rate of is what do you mean by in 10 years and what do you mean by compound growth rate of growth. The coefficient of trend variable in the growth rate 6.6.6 beta 2 is in 10 years at a point in time rate of growth and not a compound overall period of time. In 10 years का मतलब होता है कि एकदम एक ही पॉइंट के ऊपर जो हम we can check the growth rate and compound we all over growth rate from period 1 to n जितने भी time period है उस सबका अगर add up करें over the period of time तो वो compound growth rate होता है. In 10 years का it's mean that in single point we can check the growth rate. If we check the growth rate, all the points, this is called the compound. But we can check the growth rate in single point, like this point, this point. This is called the instantaneous growth. But the latter can be easily found from by taking the anti-log of the estimate beta 2 and subtract 1 from and it's multiplying by difference 100. The overall illustrated example is log coefficient is 0.0047. Therefore, anti-log minus 1 0.007 and 0.7%. This illustrates the example compound growth rate on expenditure on services was 0.746% per quarter, which is slightly higher than the intent 10 is 0.7%. This is the force due to compounding effect. तो ये देखें कि इंस्टेंटेनियस का जब हम ग्रोथ रेट लेंगे कंपाउंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जो हमारे पास स्लोप है बीटा की कोएफिशिएंट की स्लोप है which is हमारे पास है 0.007 point. If we can get a compound growth we took take an anti-log of this and this is minus from 1 so we can get a 0.0076 or if we multiply with this growth rate with 100 तो परसेंटेज में हमारे पास ये आ जाएगा 0.74 यानी 74%. But services were 0.74% which is slightly higher than instantaneous. अगर हम instantaneous growth rate देखें which is over instantaneous growth rate is per point पे was 0.74 0.74 0.7 over instantaneous growth rate estimate exponential growth rate जो है तो हमारे पास 0.74 है जो हमने एक पॉइंट पे निकाला है. जब हम कंपाउंड लेंगे तो वो over 0.746 which is slightly higher than instantaneous. This is the cause due to compounding effect. यानी ओवरऑल जो जितना भी इसमें ट्रेंड हो रहा है वो सारा ऐड हो जाएगा इंस्टेंटेनियस में. दूसरे में जो है वो सिंगल है इसलिए ये हाई शो कर रहा है कंपाउंड. So linear trend model we can get the linear instead of estimated the model 6.1. Researchers sometimes estimate the following model y is equal to yt is equal to beta 1 plus beta 2 t plus ut. That is instead of regression is log of y on the time. The regression y on time which is y regression under the consideration. So the model is called the linear trend model and the time variable t is known to be trend variable. If the slope of coefficient is positive this is upward trend where a negative downward. अगर हम इसके साथ log न लगाए ना
तो ये हमारे पास लीनियर ट्रेंड मॉडल होगा, बिकॉज टी इज हमारे पास टाइम वेरिएबल होगा और वाई हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम के चेंज होने से वाई में कितना चेंज आएगा, दिस इज ओवर लीनियर ट्रेंड मॉडल। इफ वी take a log on y, we can get a we can get a we can get a log linear model. So here we can see that if our slope value is positive, model is upward, our trend is upward. Agar if slope is negative, our trend is downward. For the expenditure on services data, we can consider that the let of fitting the linear regression model ES is equal to, this is our coefficient beta naught and this is our beta 1, this is our time period. Here t value is very high and इसकी भी t value और इसकी both r square जो है 98% these variable explain the dependent. In contrast of equation 6.6 says scientific interpretation of equation is as follows. Over the quarterly period 1993 quarter 1 to 1998 on average, the expenditure on services increased by absolute rate of 20 billion डॉलर पर क्वार्टर। दिस वाज द अपवर्ड ट्रेंड इन है। ये देखें इसका जो ट्रेंड है इस मॉडल का ये अपवर्ड है। 1% हम उसमें अगर टाइम पीरियड हमारा इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से हमारे एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज में इतना 19.6 ये इंक्रीज हो रहा है। तो ये इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है विद एक्सपेंडिचर का ट्रेंड टाइम के साथ। तो ये अपवर्ड ट्रेंड है। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल, so y is equal to beta 1 plus beta 2 x3 plus beta 3 x3 plus mu. Here we see that in the independent side we have two variables. Before we can get on, we have only one variable. Here we see that there are two variables. One is x2 and one is x3. The coefficient of beta 2 and beta 3 called the partial regression coefficient. Partial mean we singly we estimate the beta 2 and beta 3. This is all basically intercept and these are the slopes. Beta 2 measure the change in the mean with by estimated value of y per unit change in the x2 होल्डिंग द वैल्यू ऑफ x3 कांस्टेंट। यानी जब हम x2 को कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो हमें x3 को कांस्टेंट रखना है। जब x3 को कैलकुलेट करेंगे तो x2 मैंने आपको पहले बताया था कि हम जब इकोनॉमिक्स में जब वेरिएबल की बात करते हैं, जब मॉडल में आते हैं तो हम डिस्कस करते हैं ओनली टू वेरिएबल, अदर थिंग्स आर रिमेन कांस्टेंट। जब x2 को x3 से कैलकुलेट करेंगे तो x3 को हम कांस्टेंट रखेंगे और x3 को y से रिलेशनशिप चेक करेंगे तो x2 को कांस्टेंट और हम इसका पार्शियल कोरिलेशन निकालेंगे। Put the difference in the direct to that effect do not change in x mean value of y. So yt is equal to beta 1 plus beta 2 x2i plus beta 3 x3i plus mu, where y is the child mortality rate, x2 is per capita income and x3 is फीमेल लिटरेसी रेट। यानी जितने बच्चे हमारे पैदा हो रहे हैं उसको हम डिपेंड करते हैं वाई पे और एक्स पे, हमारी पर कैपिटा इनकम और फीमेल लिटरेसी रेट, इन दोनों का इनकम है ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे क्या इम्पैक्ट करता है। लेट अस सपोज वी वांट टू होल्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ female literacy rate constant. In the female literacy some may have some effect on child mortality as well as being concreted. We can do to remove the linear influence of female mortality rate from both CM child mortality rate and CGMT by running the relation CM is। तो CM जो है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है उसका हम अगर फीमेल लिटरेसी रेट के साथ रिग्रेशन पहले चेक करेंगे और फिर जीडीपी का फीमेल लिटरेसी रेट के साथ इंडिविजुअली चेक करेंगे। तो ये हमारे पास एक अलग, ये अलग, इसका आर अलग आएगा, इसका आर अलग आएगा। इसको कहते हैं पार्शियल रिग्रेशन। इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट? पार्शियल रिग्रेशन। तो म्यू, this is our mu. If we calculate the mu result, these two values going toward the other side of the equation, इनको हम child mortality rate से इनको माइनस कर लेंगे।
represent as the part of CM left after removing it the linear influence of female behavior. इसका जो influence है इसको माइनस करने के बाद चाइल्ड मॉडल जो बाकी हमारे पास ये एरर आएगा। इसी तरह ये एरर आएगा जीडीपी में से फीमेल लिटरेसी रेट को माइनस करेंगे। तो नाउ वी रिग्रेस U1 ऑन U2 यानी इसका जो एरर आया है इसके एरर ये जो एरर हमने कैलकुलेट कर लिया है ना यहाँ और ये जो एरर यहाँ से कैलकुलेट जब इन दोनों को आप उसमें रिग्रेस करेंगे U1 और U2 पे तो द स्लोप ऑफ कोफिशिएंट जो हमारे पास इसका जो अल्फा आएगा ये यानी ये है ना म्यू ये एक नई इक्वेशन बन जाएगी ना म्यू इज इक्वल टू अल्फा म्यू1 जब इनका रिजल्ट को आपस में रिग्रेस करेंगे तो हमारे माइनस आ रहा है। नाउ गिव द ट्रू नेट इफेक्ट ऑफ चेंज इन EGNP per capita growth rate जो है उसको चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे और ट्रू स्लोप ऑफ EM चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट with respect to it. This is given that the partial regression coefficient is behind GM यानी क्या है कि अगर हमारी इसमें माइनस शो कर रहा है कि एरर टर्म जो आ रहा है दिस स्लोप ऑफ कोफिशिएंट नाउ गिव आउट द ट्रू और नेट इफेक्ट ऑफ अगर हमारी पर कैपिटा जीएनपी बढ़ेगी तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम होगा और पर कैपिटा इनकम कम होगी तो चाइल्ड अगर जितने आबादी ज्यादा होगी ना हमारी ग्रोथ रेट कम होगी जितनी आबादी कम होगी ग्रोथ रेट पर कैपिटा क्या होता है कि हमारी जो टोटल ग्रोथ रेट होती है उसको हम जब डिवाइड करते हैं किसके साथ पॉपुलेशन के साथ तो वो हमारे अमाउंट कम आती है। इट्स मीन दैट अगर हमारी पॉपुलेशन कम होगी तो पर कैपिटा ग्रोथ रेट ज्यादा होगी पॉपुलेशन ज्यादा होगी पर कैपिटा ग्रोथ रेट कम होगी। ये हमारे पास एक्यूरेट शो कर रहा है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो टोटल वेरिएशन you know that y is equal to beta 1 hat plus beta 2 x plus u। तो यहाँ पे हम देखें y is the total dependent variable, x is the independent variable and mu is the residual। तो total variation in y is equal to x independent variable plus residual। So we know that TS as total sum of square is equal to explanatory plus residual sum of square। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे सिंपल रिग्रेशन फ्रेमवर्क का ये मॉडल है जो हमने एस्टिमेटेड वैल्यू हमारे पास ये हमारे पास दिस इज ओवर एक्चुअल वैल्यू जब वी डिफरेंस टेक अ डिफरेंस फ्रॉम कैलकुलेटेड वैल्यू टू एस्टिमेटेड वैल्यू वी गेट अ रेसिड्यूल टर्म। ये ज्यादा टर्म निकालेंगे। We already discussed this model variable। So these are our we also discuss all these values over we can calculate the chow test and thank you so much for listening my video। I hope this is our final lecture on this model। If you have feel